Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos. Students, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th CBSE NCERT एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर. सो सी, लास्ट जो हमने पॉलिनोमियल्स किया था, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, the link is given in the description. Watch that video and understand polynomials. क्योंकि polynomials से हम quadratic equation कर सकते हैं. So any polynomial we saw is in the form of ax square plus bx plus c, and we say that is equal to, if I say that is equal to 0, then that becomes a quadratic equation. That's all. So what is a quadratic equation? A quadratic polynomial equated to 0. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. सो हम जब डिग्री बोलते हैं तो देखिए, द वेरिएबल्स हियर आर एक्स. सो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है. सो वी विल से दैट डिग्री इज 2. If the degree is 2, then that equation is a quadratic equation. Okay. Now, so let us look at some examples. So if I give you 3x square minus 5x plus 7 equals 0. So is it a quadratic equation? Yes. Why? क्योंकि x का डिग्री यहाँ पे 2 है और वो हाईएस्ट है. So degree of this equation is 2. But if I give you a equation like 5x minus 7 equals 0, what is the degree of the polynomial here? Degree is 1. So this is not quadratic equation. Also, if let us say I have just 36x square minus 7 equals 0. So is it a quadratic equation? हमें क्या चेक करना है? Degree. What is the degree of this polynomial? 2. So yes, it is quadratic equation. Okay. Now हमको क्या इसमें से अब तक समझ आया? Any equation will be called a quadratic equation if it is in the form of ax square plus bx plus c equals 0 and a should not be equal to 0. a 0 नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे a है ही नहीं, x square है ही नहीं, so a quadratic equation नहीं है. Also, the highest power of x has to be 2. If it is more than 2, then also it is not quadratic. So let us write some examples. So let us say I write 4x cube minus 5x square plus 7 equals 0. So डिग्री 3 है. So ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक्चुअली क्यूबिक हो जाता है, बट हम अभी क्वाड्रेटिक में फोकस कर रहे हैं. So this is not quadratic. So now let us move to exercise 4.1, where first question is check whether the following are the quadratic equations. So first question, first one हमसे पूछा गया है, we are given x plus 1 the whole square equals 2 times x minus 3. स्टूडेंट्स, ये आपका एक MCQ टाइप क्वेश्चन होगा या 1 मार्कर. नाउ x plus 1 whole square is what? It is a plus b whole square. ठीक है. What is a plus b whole square? Quickly, a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. यहाँ पे a क्या है? x. ओके. और b क्या है? 1. So x plus 1 square would be x square plus 2x plus 1 square, which is 1. यहाँ पे देखिए 2 into x is 2x, plus into minus is a minus, and 2 times 3 is a 6. Now let us shift the side. So remember, when side changes, sign changes. So अब हमारे पास क्या होगा? देखिए मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी x square plus 2x plus 1 है. अब this 2x comes to this side becomes minus 2x, minus 6 comes to other side becomes plus 6. So final equation क्या हो गई? Final equation हो गई x square plus 7 equals 0. What is the degree? 2. So is it quadratic equation? Yes, it is quadratic. Okay. So whenever you get questions like this, आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, बिकॉज वो कई बार ऐसा होगा कि इक्वेशन लगेगी कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बट जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको कंफर्म होगा. सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट इज x square minus 2x equals minus 2 times 3 minus x. So left hand side तो already simplified है.
Right side में minus into plus is a minus and 2 times 3 6. Then minus into minus is a plus and 2x. Again change of side. So ये minus 6x side change करेगा plus होगा, plus 2x side change करेगा minus होगा. Let us write that down. So we have x square minus 2x plus 6 minus 2x which is equal to 0. Now minus 2x like terms हैं. So like terms get added, sign remains the same. So we will have x square minus 4x plus 6 equals 0. What is the degree? 2. So is it quadratic? Yes. Okay. Now let us move to the third question of the same. So the third question is x minus 2 times x plus 1 which is given equal to x minus 1 times x plus 3. Yeah. So now let us multiply x with x plus 1. So x into x is x square. X into plus 1 is plus 1x. Now minus 2 into x is minus 2x. Minus 2 into plus 1 is minus 2. Okay. Now let us go to right hand side. X into x, x square. X into 3, 3x. Minus 1 into x is minus x. Minus 1 into plus 3 is minus 3. Now let us simplify. Plus 1x minus 2x is minus x minus 2 और यहाँ हो जाएगा x square 3x minus x is 2x minus 3. Again let us change the side and sign will also change. Okay, so let's do that. So left hand side already x square minus x minus 2 है. Plus x square comes to this side becomes minus x square. Plus 2x comes this side becomes minus 2x. Minus 3 comes this side becomes. Now see x square minus x square gone. Minus 2x minus x is minus 3x. Plus 3 minus 2 is 1. What is the degree here? 1. So this is not quadratic equation. Remember हमने क्या start किया था कि polynomial क्या form में है ax square plus bx plus c and a should not be 0. यहाँ पे a है ही नहीं. So this is not quadratic equation. Okay. Now students let us move to the next question which is fourth one. It is similar. Okay, अगर आप देखेंगे मैं करता हूं यहाँ आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ. ओके, and then you can start the video and check if you are getting confused. Okay, so my suggestion is pause the video, do this yourself. Now students, x into 2x is 2x square. X into plus 1 is plus x. Minus 3 into plus 2x is minus 6x. Minus 3 into plus 1 is minus 3. Okay, minus into plus is a minus. ये सब हमें basics ध्यान रखने हैं. X times x is x square and x times 5 is 5x. Again, let us do change of sides and change of sign. We remember. So let's do that. So यहाँ x minus 6x बन गया minus 5x. So पहले left hand side को simplify कर देते हैं. And now plus x square comes this side becomes minus x square. Plus 5x comes this side becomes minus 5x. Now 2x square minus 1x square is x square. Minus 5x same sign, so add हो जाएंगे. So 10 और sign negative है, so minus. So minus 10x minus 3 equals 0. What is the degree? 2. So it is quadratic equation. Okay. Now students, let's go to the next question, which is question number 5th of the first one. Again, you can pause the video and try to solve the question yourself and then start the video and see if you have got it right. Okay, so this is the question. Again, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए and then come back and check कि आपने ये सही किया या नहीं. So now let's do this. So 2x into x is 2x square. Plus into minus is a minus. 2 times 3 is 6. So minus 6x. Again minus 1 into x is minus 1x. Minus 1 to minus is a plus and 1 into 3. So this is what we get. Here x into x, x square. X into minus 1, minus x. Plus 5x and minus 5. Now let us simplify left side. So 2x square
minus 7x plus 3, which is equal to x square plus 4x minus 5. Now let us change the sides again. Okay, what is the rule? Side changes, sign changes for plus and minus. Okay, so now we have 2x square minus 7x plus 3 plus x square comes to this side becomes minus, plus 4x comes to this side becomes minus 4x, minus 5 comes to this side becomes plus. Okay, so now 2x square minus x square हो जाएगा x square, minus 7x minus 4x is minus 11x, plus 5 plus 3 is plus 8, which is equal to 0. So students, what is the degree of the polynomial or quadratic equation? It is 2. So is it quadratic equation? Yes, it is quadratic equation. Give me a second, students. Uh, yeah. So now let us move to the next question, which is question number 6th one. Okay. We are given x square plus 3x plus 1, which is equal to x minus 2 whole square. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप ये एक्स स्क्वायर देख के सोचेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, बट दैट वुड बी टू अर्ली टू डिसाइड. हमें पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी विल से कि विद कंफर्मेशन वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड यहाँ मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस इक्वेशन में a x है, b 2 है. सो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंगली, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, सो आई कैन जस्ट राइट 2x इंटू 2 एंड प्लस b स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर विच इज 4. So we get x square minus 4x plus 4 and left hand side is okay. Now again let us change the side. So minus 4x comes to this side will become plus and this will become minus 4. So let's do that. So x square plus 3x plus 1 तो हमारा left hand side था. ये x square side change हुआ becomes minus x square. And minus 4x becomes plus 4x and ये minus 4. Now students, what will happen? X square minus x square gone. 3x plus 4x is 7x. Plus 1 minus 4 is minus 3. What is the degree of this polynomial? 1. So is it quadratic equation? No. So this is not quadratic. Okay, this is not quadratic equation. Okay. Now let us do the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 क्यूब. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है x प्लस 2 क्यूब और राइट हैंड साइड है 2x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए लेट अस फर्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल क्यूब. वो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी plus 3ab square plus b cube. Now what is our a here? A is x. What is our b here? 2. So आइए इसको सॉल्व करते हैं. a cube means x cube plus 3 times a which is x times squared times 2 plus 3ab square, so 3 times x into b square which is 2 square plus b cube which is 2 cube. So ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई. अब राइट साइड में चलते हैं. 2x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस 2x क्यूब. 2x इंटू माइनस 1 विल गिव अस माइनस 2x. अब इधर सॉल्व करते हैं. सो ये हो गया x क्यूब. 3 टाइम्स 2 इज अ 6, सो यू गेट 6x स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, सो 12x एंड 2 क्यूब इज 8. और दूसरी साइड में मेरे पास है 2x क्यूब माइनस 2x. अगेन लेट अस डू चेंज ऑफ साइड एंड चेंज ऑफ साइन. सो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x विच इज इक्वल टू 0. नाउ
x cube, which is 1. 1 minus 2 is minus 1x cube. Okay, 6x square. Then 12x plus 2x will become 14x and plus 8, which is equal to 0. Now students, what is the degree of this equation? Degree क्या होता है? Highest power of the variable. Variable कौन है यहाँ? x. What is the highest power? 3. So हमने क्या देखा था? हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा अगर डिग्री इज 2. ओके, यहाँ तो डिग्री 3 है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, हम क्या करेंगे? इसको नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1. I think eighth part. Yeah, eighth part. So let's write that down. स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज वॉच इट. ओके, प्लीज शेयर द चैनल विद एटलीस्ट 10 of your friends and help us spread the word. अगर आप अपनी तरफ से एक छोटा सा ये प्रयास करेंगे, इससे हमारे को बहुत फायदा होगा और हम मोटिवेटेड रहेंगे और वीडियोस बनाने के लिए. तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 8, विच इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 2 क्यूब. ओके, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, क्योंकि राइट साइड तो सॉल्व है ही. ये है a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला. वो क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. a क्या है यहाँ? x. b क्या है? 2. सो लेट अस सॉल्व. सो राइट हैंड साइड तो मेरी एज इट इज है, मैं उसको सेम कॉपी कर लेता हूँ. लेट मी कॉपी दैट डाउन. नाउ कम्स द राइट साइड. सो a क्यूब विच इज x क्यूब minus 3a square b, so 3x square into this plus 3ab square, so 3 into x into 2 square minus b cube which is 2 cube. Okay students, now हो जाएगा क्या? x cube minus 3 into 2 is 6, so minus 6x square. Again 2 2s are 4, 3s are 12, so plus 12x and minus 8. Okay, right side को एज इट इज कॉपी करते हैं. नाउ अगेन वी डू चेंज ऑफ साइड, चेंज ऑफ साइन. सो ये एक सिंपल सा रूल है, आपने याद रखना है. जब भी हम प्लस और माइनस वाले टर्म्स को साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा. तो अब हम ये कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपको एरो से दिखा रहा हूँ कि हम कौन सा साइड से चेंज कर रहे हैं. सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, देन माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 6 था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 12x गोज टू अदर साइड बिकम्स माइनस 12x, माइनस 8 गोज टू अदर साइड बिकम्स प्लस 8. नाउ स्टूडेंट सी, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब गॉन. अब हमारे पास है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 9. What is the degree of the polynomial? 2. So it is a quadratic equation. Okay students, so अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया. Now let us move to question 2 of exercise 4.1. So question 2 हमें बोला गया है represent the following सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ये आपको ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में मिलेंगे वेयर यू वुड बी आस्क्ड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ हमें सॉल्व करने को नहीं बोल रहे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोल रहे हैं. तो हम इसमें अपने क्वेश्चंस को पढ़ के उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. So students, first let us understand area of a rectangle क्या होता है. area of a rectangle होता है its length into breadth. Okay,
So according to question, length into breadth is 528 meter square. Okay. Also हमें कंडीशन दी है कि ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. सो ट्वाइस द ब्रेथ विल मीन व्हाट, टू टाइम्स ब्रेथ. ओके. एंड वन मोर मतलब आप ब्रेथ में प्लस करके वन कर दीजिए. सो ये हमने क्वेश्चन से समझा. नाउ हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स मीटर, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी y मीटर्स. सो अब पहली इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, यहां से x इंटू वाई इक्वल्स 528, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेंथ विच इज x इक्वल्स 2y प्लस 1. ओके. ये हमारा क्वेश्चन है कि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ना इसको क्वाड्रेटिक हम कैसे बनाएंगे, सी यहां से देखिए x इक्वल्स 2y प्लस 1. सो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट x इन द फर्स्ट इक्वेशन विद 2y प्लस 1. सो इफ आई डू दैट, सो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ x आई एम राइटिंग 2y प्लस 1 times y which is equal to 528. Now y into 2y is 2y square, y into 1 is y. 528 comes to this side becomes minus 528, and that is equal to 0. And this is what is asked in the question. हमको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये हमने बना दिया. सिंस अभी सॉल्व करने को नहीं बोल रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. ओके. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके. इन दी नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हेन वी आर सॉल्विंग, तब हमको समझ आएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं. वी आर जस्ट मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नाउअडेज यू गेट दीज क्वेश्चंस इन केस स्टडी. द क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वन. It says the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers, make the quadratic equation. Now students understand, consecutive integers क्या होते हैं, consecutive, okay, integers. ये आपने क्लास 6 और 7 में भी किया होगा ना, सक्सेसर, प्रेडेसेसर. सो 3 के बाद क्या आता है, 4. सो इसका मतलब 3 प्लस 1, दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. 100 के बाद क्या आएगा, 100 प्लस 1, सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. सो सपोज x एक नंबर है, तो उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1. सो x एंड x प्लस 1 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. सो दिस इज व्हाट वी विल डू. सो हम बोलेंगे लेट दी टू consecutive positive integers be positive integers b x and x plus 1. Now according to question, product of two consecutive integers is 306. So product करना है, so x into x plus 1 equals 306. Now x into x is x square, x into plus 1 is plus x. 306 comes to this side becomes minus 306 equals 0. So this is how we form the quadratic equation. Okay students, now let us move to the question number 2, third one. Okay, यहाँ बोला जा रहा है रोहन्स मदर is 26 years older than him and the product of their ages 3 years from now will be 360. Okay, and question says we would like to find Rohan's present age, form the quadratic equation. Student, age related question में एक चीज को समझते हैं. Let us say एक Mr. X है and whose age, present age is 15 years. ठीक है. So now there is Mr. Y whose age is 5 years more than X. So what would be Y's age? 15 plus 5. Okay. So that is 20 years. Okay.
नाउ लेट अस से अगर मुझे 3 ईयर बैक जाना है, सो 3 ईयर्स अगो एक्स की एज क्या होगी? आज वो 15 साल का है, 3 साल पहले वो 15 - 3 12 ईयर्स का होगा। लाइक वाइज वाई की एज क्या होगी 3 साल पहले? वाई वुड बी 20 - 3। हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऑल्सो जब हम बाद में और क्वेश्चंस करेंगे, अगर लेट अस से मेरे को इनकी एज जाननी है 10 ईयर्स लेटर और हेंस, सो आज एक्स 15 ईयर्स का है, 10 ईयर्स लेटर एक्स की एज क्या होगी? 15 + 10 25। वाई की एज क्या होगी? 20 + 10 30। सो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई जब एज पुराना निकालना है तो वो नंबर माइनस करना है जितना साल पहले बोला, और बाद की एज निकालनी है तो हमें ऐड करना है। सो यही हम करेंगे in terms of variables. Okay, so now let us move to the question. So the question, I'll again repeat and start forming equation. It says Rohan's mother is 26 years older than him. So हम बोलेंगे कि भाई let Rohan's present age be x years. अब his mother's age according to question mother is 26 year older than him. So रोहन अगर x years का है तो उसकी मदर है x + 26 years की। ठीक है। Now it says the product of their ages in years 3 years from now. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे 3 years from now। पहले x और y के टर्म, x की टर्म में एजेस निकाल लेते हैं। 3 years from now रोहन कितने साल का होगा? रोहन्स एज जो आज x है, 3 years आफ्टर इट वुड बी x + 3। और मदर कितने साल की होगी आफ्टर 3 years? सो मदर्स एज प्रेजेंट एज इज x + 26 एंड +3। सो मदर कितने साल की हो जाएगी? x + 29 की। नाउ हम क्वेश्चन को देखते हैं एंड इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। सो अब उनकी एज हमारे पास है 3 साल बाद वाली, उसका प्रोडक्ट करना है। सो x + 3 टाइम्स x + 29 which is equal to 360. Now let us simplify. X into x, x square. X into 29 is 20x, 29x. 3 times x is 3x and 3 times 29 is 87. 360 comes to this side becomes minus 360 which is equal to 0. So the final quadratic equation is x square plus 32x, okay, and minus, so 10 minus 7 is a 3, 15 minus 8 is a 7, so minus 273 equals 0. So that is our quadratic equation. Okay students, now हम बढ़ते हैं towards the last question of exercise 4.1. Okay, now let us read the question. It says a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train, form the quadratic equation. So student, first let us understand speed क्या होता है? Speed equals distance divided by time. ठीक है, फिजिक्स में हम करते हैं ना, rate of change of distance is speed. So speed equals distance by time. So कैन आई से, सो अगर मैं इसको टाइम को यहां ले आऊं और स्पीड को नीचे ले आऊं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल है, सो कैन आई से टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, एक और चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, स्लोअर स्पीड, ओके, व्हीकल विथ स्लोअर स्पीड, इफ देयर इज अ व्हीकल with slower speed, it will take more time to cover distance, same distance, more time to cover same distance. Okay, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पता होगा। अगर आप कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, लेट अस से 40 किलोमीटर्स का, ठीक है, और अगर आप साइकिल से जाएंगे और अगर आप
स्कूटर से जाएंगे, सो स्कूटर का स्पीड ज्यादा है, साइकिल का कम है, सो साइकिल विल टेक मोर टाइम देन स्कूटर. ओके, so this is what we need to keep in mind. Yeah. Now let us go to the question जहां हम इस concept को use करेंगे. So देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया. We are given that the distance the train is traveling is 480 kilometers, and we will say let the original speed, because हमें speed दी नहीं है, let the original speed of train be x kilometer per hour. ठीक है. So what would be the time taken to cover the distance? So let us write time taken to travel 480 kilometers. So let us say t1. So as I said, time is what? Distance by speed. So time would be 480 by x hours. Now situation 2 में क्या बोल रहे हैं? If the speed had been for 8 kilometer per hour less. So distance तो same है. अब हम जाते हैं केस 2 की तरफ. स्पीड जो कि पहले x थी, it is 8 kilometer per hour less. That means speed has become x minus 8. Okay, kilometer per hour. So speed has been reduced. This is slower speed. Okay, so slower speed means time अब ज्यादा लगने वाला है. So अब time taken क्या होगा? t2 would be, because distance is same, so 480 by x minus 8 hours. So the question says it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So यहाँ पे ये टाइम ज्यादा है. So what is being said? T2 minus T1 equals 3. Okay. So now let us write this and form a quadratic equation. We will just form the quadratic equation. Solution हम next chapter से शुरू करेंगे. So T2 is 480 by x minus 8 minus 480 by x, which is equal to 3. अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में इट इज एडवाइजेबल आप न्यूमरेटर कॉमन ले लो. इट हेल्प्स टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर. सो आपके पास हो गया 1 over x minus 8 minus 1 by x, which is equal to 3. अब हमें क्या करना है? एलसीएम. सी अनलाइक फ्रैक्शंस है, दिस एंड दिस फ्रैक्शन डज नॉट हैव x, so I need to multiply this with x. This fraction does not have denominator x minus 8, so we need to multiply with x minus 8. Students, please keep in mind brackets लगाइएगा, because minus in front of a bracket sign will change. Okay, that is very very important. अब हम solve करते हैं ये bracket वाला part. Okay, मैं यहाँ पे इसको यहाँ से शुरू करता हूँ. I will start from here. Let me change the color. Let me use green color. So I have already taken 480 common. Now I have x minus, or within brackets I have x minus 8 over x into x minus 8, which is equal to 3. So क्या बन जाएगा ये? 480. Now x, when you open the bracket, sign will change because there is a minus. So minus x plus 8. Denominator x into x is x square and minus 8x. और यहाँ हमें मिल गया 3. ओके, सो ये x एंड माइनस x कट गए. सो हमारे पास आ गया 480 इंटू 8, बिकॉज ये प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 8x. स्टूडेंट्स, इफ यू नोट 480 इज डिविजिबल बाय 3. आप 4 और 8 को ऐड करो, 12 मिलेगा. 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो. सो वी विल गेट रिड ऑफ 3. Now 480 divided by 3 is 160. So 800, 8648, 8 ones are 8. So x square minus 8x. Since we have got a quadratic, what should we do? Shift the number to the other side. So what will happen? So we will have 0 equals x square minus 8x minus 1280. So हमारी quadratic equation क्या हो गई? हम इसको x square minus 8x minus 1280 equals 0 लिख देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. So with this we come to the end of exercise 4.1.
जो है फर्स्ट का मेन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0। ओके, सो अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो रूल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमने पॉलिनॉमियल किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको जीरो कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। बट पॉलिनॉमियल में मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि ए है एंड कांस्टेंट जो कि सी है, वो बन जाता है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज ए इंटू सी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी आप एक्स को हटा दो, बाकी क्या बचा? बी। सो वो बन जाता है सम। अब हमने क्या करना है, हमको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट सच दैट प्रोडक्ट इज ए सी एंड सम इज बी। ओके, और इसमें हम साइंस जो होते हैं प्लस और माइनस, दीज आर इंपॉर्टेंट, तो हम उसका ध्यान रखेंगे। सो लेट अस नाउ डू दिस। Now let us do this. So what is the product here? Coefficient of x square is 1. C is minus 10. So 1 into minus 10. So minus 10. Sum जो कि coefficient of x है वो क्या है? Minus 3. So let us write minus 3. Now factors of 10 are what? 5 and 2. Can they give me 3? Yes. What do I need? I need a minus 3. इसका मतलब 5 का साइन माइनस होना चाहिए. So minus 5 plus 2 is going to give us minus 3 and minus 5 into 2 gives me minus 10. So दोनों condition satisfy हो गई. So middle term will now be written as, so middle term which is minus 3x will be written as minus 5x plus 2x minus 10 which is equal to 0. Now क्या करेंगे हम? We will do factorization in the groups. So first x square minus 5x में x common है. So let's take x common. X square divided by x and then minus 5x divided by x. ये होता है common लेने का मतलब. Now let us do for this between 2 and 10. 2 is common, so take 2 common. So we are doing 2x divided by 2 minus 10 divided by 2. Now what will happen? This x will remove one power because 2 minus 1, so वो होगा, और यहाँ ये x इसको काट देगा, इधर 2 से 2 कटा और 10 divided by 2. So हमें क्या मिला? हमें मिल रहा है x into x minus 5 plus 2 into x minus 5 which is equal to 0. अब हमने क्या करना है? x minus 5 is common, so let us take x minus 5 common and we are left with x plus 2 which is equal to 0. Now we will use zero product rule. Okay, zero product rule. What is that rule? It says if a into b is 0, that means either a is 0 or b is 0. या both भी 0 हो सकते हैं. Okay, so that is what we will use. So we will say either x minus 5 is 0 or x plus 2 is 0. Now if x minus 5 is 0, x would be equal to minus 5 goes to other side becomes plus 5. Here x will become plus 2 goes to other side minus 2. So these are our two solution for this quadratic equation. Okay, these are the two roots. X can be 5 or x can be minus 2. Okay, students. Now let us move to second question. Okay, question number 1 main second one. That is 2x square plus x minus 6 equals 0. Now, what is the product here? Product is coefficient of x square which is 2 times constant which is minus 6. So product is minus 12. What is sum? Coefficient of x. देखिए x लिखा हुआ है तो इसका मतलब by default ये 1 है. So factors of 12 such that product is minus 12 and sum is plus 1. So देखिए 4 and 3. Okay. इससे हमको क्या 1 मिल सकता है? प्लस 1. यस, कैसे? इफ आई डू प्लस 4 माइनस 3, सो सम इज प्लस 1. ऑल्सो प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्रोडक्ट इज माइनस 12. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. सो क्या करेंगे हम? वी विल राइट दिस एज नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 3x minus 6 equals 0. Now we will do factorization.
Between 2 and 4, 2 is common. Between x square and x is common. Okay, least power is common in variables. Now, what is happening inside? See, this we do in our mind, but I am just doing it so that you know these steps. So 4x, so I am doing this. Now, students, जब आप इसको solve करेंगे क्या होगा? देखिए, this 2 will cut to x square divided by x is just x divided by x gone, and this is 2. So हमें क्या मिल रहा है? We are getting 2x into x plus 2. Now when we go to the next one, can you see there is minus and minus, और हमको अंदर ब्रैकेट में क्या चाहिए? दोनों प्लस चाहिए. तो हम क्या करेंगे? माइनस, and between 3 and 6, 3 is common, so we are taking minus 3 common. Now inside what is happening? Minus 3x divided by minus 3 minus 6 divided by minus 3. Okay. Now minus divided by minus is a plus. So we will do that. So this 3 goes 6 divided by this. So we get minus 3x plus 2. Now what are we doing? X plus 2 is common in both. So let us take x plus 2 common, and then we are left with 2x minus 3, and since this is an equation we are keeping it equal to 0. Again, what will we do? We will use zero product rule. So you just make this statement using zero product rule. So either x plus 2 is 0 or 2x minus 3 is 0. If x plus 2 is 0, x would be equal to minus 2. यहाँ क्या होगा? 2x would be equal to 3. Minus 3 goes to other side, becomes plus 3. Or x equals 3 by 2. So these are the roots for this question. Okay. अब हम बढ़ते हैं students. Let us move to question number 1, third one. Students, if you are watching this channel for the first time, you are requested to please subscribe to the channel. Press the bell icon. Also, if you like the video, please press the like button and share the video with at least 10 of your friends so that we are motivated to keep on making these videos for you in your to and help you in your journey to clear board exams with good marks. Okay? अब हम बढ़ते हैं question number 1, third part, which is root 2 x square plus 7x plus 5 root 2, which is equal to 0. Okay. Now what is product here? See, coefficient of x square is root 2. Constant is 5 root 2. So if you do that, so you get root 2 into 5 root 2. So which is 5, and root 2 into root 2 is 2. So product is 10. Sum, which is coefficient of x, is 7. Okay. Now 10 के factors क्या होते हैं? 5 and 2. So if you add them, you get 7, and multiply, you get 10. So what will we do? We will rewrite this as root 2 x square plus 5x plus 2x plus 5 root 2, which is equal to 0. Okay. Oh, yes. Now let us move and do the factorization. So between these two, see, between root 2 and 5 nothing is common. Between x square and x is common. So take x common. So I will just do the step of dividing so that it is clear to all of you that how we are doing this. Now, students, if you do this, this x square divided by x is just x, this x and x gone. So we are left with x into root 2x plus 5. Okay. Now, if you go to this part, okay, here, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कॉमन नहीं है, but think, we have root 2 here, and what is 2? 2 is root 2 into root 2. That means 2 divided by root 2 will give us root 2. So हम अगर 2 को root 2 से divide करेंगे, so हमें root 2 मिलेगा. So what will we do? We will take root 2 common. So we are going to take root 2 common. And then what are we doing? 2x divided by root 2 plus 5 root 2 divided by root 2. Now, as we discussed, 2 divided by root 2, हमको मिल गया यहाँ पे root 2x, root 2 and root 2 cut each other.
So we have root 2 into root 2x plus 5, which is equal to 0. Now what is happening? Root 2x plus 5 is common, so let's do that. And then we are left with x and then plus root 2, which is equal to 0. Again, what will we say? We will say zero product rule. Okay, we are going to apply zero product rule, which gives me root 2x plus 5 equals 0, or x plus root 2 equals 0. So here what will happen? Root 2x equals minus 5, x equals minus 5 by root 2, and here x would be minus root 2. Okay, मोस्टली हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को रूट नहीं रखते, so we can rationalize this, that is multiplying numerator and denominator by root 2. So what will happen? It will become minus 5 by 2, okay, root 2. So one of the root is this and other root is minus root 2. Okay students, सो स्टूडेंट्स, आप जब ये वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट आप इसको दोबारा देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए खुद सॉल्व करने की। नहीं समझ आता है फिर दोबारा देखिए, कॉपी मत करिए। ओके, क्वेश्चन कॉपी करके समझ नहीं आएगा और ना सिर्फ देखने से आएगा, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ वन, which is 2x square minus x plus 1 over 8, which is equal to 0. So यहाँ फ्रैक्शन है, so what should we do? फ्रैक्शन है तो देखिए, any number, okay, we can make denominator as 1. So now these are unlike fractions, so मुझे इनको like fraction करना है. So 1 और 8 का LCM is 8. So what should I do? Multiply this with 8. So I need to multiply numerator with 8. Multiply this with 8. I need to multiply numerator with 8. This is already 8. So what are we getting? We are getting 16x square minus 8x plus 1 divided by 8 equals 0. This 8 gets cross multiplied with 0 and becomes 0. Okay, so we have 16x square minus 8x plus 1, which is equal to 0. Now what is the product here? Coefficient of x square 16 into constant, so product is 16. Sum is coefficient of x, which is minus 8. Okay, अब 16 के फैक्टर्स जिनसे सम मिले -8 और प्रोडक्ट मिले +16, सो -4 into -4 is 16 and -4 gives me -8. So ये कॉम्बिनेशन है, लेट्स डू दैट. सो 16x square -4x plus 1, which is equal to 0. अब देखिए हमें क्या करना है. 4 and 16, 4 is common between x and x square. X is common, so take 4x common. So we have 16x square divided by 4x minus 4x divided by 4x. Okay, चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. So 16 divided by 4 is 4, x square divided by this, x and x cut each other, 4 and 4 cut each other, we get -1. So हमको यहाँ मिल रहा है 4x times 4x minus 1. अब सेकंड जो मेरा फैक्ट है वो है -4x plus 1. नाउ हमें क्या नोट करना है कि हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में 4x minus 1 आया है. तो देखिए 4x और 1 में 1 कॉमन है, बट हम क्या करेंगे, वी विल टेक -1 कॉमन सो दैट हमको सेम मिले ब्रैकेट के अंदर जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में है. सो अब देखिए क्या हो रहा है, -4x डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1. नाउ देखिए क्या होगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस, सो हमको मिला 4x प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस, सो दिस. अभी क्या हो जाएगा, 4x minus 1 is common, so I can write 4x minus 1 and again 4x minus 1, which is equal to 0. अब क्या करेंगे हम, we will use zero product rule. So let us quickly write, let me use different color. So I'm going here and I'm saying using zero product rule, what is happening, 4x minus 1 is 0 or 4x minus 1 is 0. So 4x equals 1
x इक्वल्स 1/4 जो कि हमें दूसरे से भी मिलेगा. सो व्हाट आर दी रूट्स 1/4 एंड 1/4. ओके, यहाँ हमने क्या देखा, दोनों रूट्स इक्वल हैं. ये हम अभी अगले चैप्टर में समझेंगे कि ये क्या होता है. बट यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इधर इस क्वेश्चन में दोनों रूट्स सेम आए. इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग थी. ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ लेट अस मूव टू question number one, fifth one, which is the last question for first question, which is 100 x square minus 20x plus 1 equals 0. ठीक है स्टूडेंट्स. सो प्रोडक्ट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x square which is 100 टाइम कांस्टेंट which is 1, so product is 100. अब सम की तरफ चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x which is -20. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 इंटू 10. ओके, बट 10 प्लस 10 तो प्लस 20 हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए -20. सो हम क्या करेंगे, -10, सो वी गेट -20 एंड -10 इंटू -10 वी गेट +100. सो ये हमारे फैक्टर्स मिडल टर्म हो गई. सो वी विल राइट इट एज -10x here, -10x plus 1 which is equal to 0. Now between 10 and 100, 10 is common. Between x and x square, x is common. So what are we doing? We are doing 100x square divided by 10x minus 10x divided by 10x. Okay. So 10, 100 divided by 10 is 10. X square divided by x is this. 10x divided by 10x is 1. So हमें क्या मिल रहा है इस ब्रैकेट में? We are getting 10x times 10x minus 1. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ है -10x plus 1, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10x minus 1. सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक -1 कॉमन हेयर एंड व्हेन वी डू दैट व्हाट विल हैपन, सो आई हैव -10x डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1. सो क्या हो जाएगा, दिस इज -1 माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस, सो विच इज 10x प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस. And now if I take 10x minus 1 common, so we are having another 10x minus 1 which is equal to 0. Then we write 0 product rule. Using that we are saying 10x minus 1 is 0 or 10x minus 1 is 0. We can see the answer would be same for both. So 10x equals 1, x equals 1 by 10 एंड वहां से भी हमें यह मिलेगा. अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा, बोथ दी रूट्स आर सेम. ओके, इसकी क्यों ये होता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर. अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2. सो हम अभी सिर्फ इतना इसको समझेंगे कि देखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग. नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वेयर इट सेज solve the problems given in example 1. So बच्चों अभी मैं let me go to example 1. example 1 में हमें दिया था John and Jeevanti together have 45 marbles. Okay, John and Jeevanti. So let us write John, Jeevanti together have 45 marbles. So हम ये कह लेते हैं कि let number of marbles with John be x and with Jeevanti be y. So according to question, they have 45 marbles together. That means x plus y equals 45. ठीक है बच्चों. Now it says both of them lost 5 marbles each. So now let us find number of marbles after losing 5 marbles. आफ्टर लूजिंग 5. सो जॉन के पास x थे, 5 चले गए, सो उसके पास अब कितने रह गए, x minus 5. जीवंती हैड y number of marbles, 5 lost, so how many he or she has, y minus 5. Then the question says the both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124. So the another equation given to us is x minus 5 times y minus 5 is equal to 124. Okay, अब यहां से हमें क्या करना है, we have to make the quadratic equation and solve it. So students, what we will do,
हमको आइदर x या y को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस करना है सो दैट हमको जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में मिले. सो इन द फर्स्ट वन कैन आई से y equals 45 minus x? Yes, I can say that. Now, in the second equation, instead of y, we will write 45 minus x. Okay, so let's do that. So we will say substituting value of y in this equation. So we will get x minus 5 times 45 minus x minus 5, which is equal to 124. Now let us simplify the brackets. So 45 minus 5 is a 40 minus x, which is equal to 124. Now let us do the multiplication. X times 40, I will get 40x. X times minus x, we will get minus x square. Then minus 5 into plus 40. Minus into plus is a minus. 5 into 40 is a 200. Now minus 5 into minus x. So minus into minus is plus. 5 into x is this. And let us bring 124 to this side because we are getting a quadratic equation. So minus 124, which is equal to 0. Now let us look for like terms. So 40x plus 5x. So सबसे पहले तो मैं लिखूंगा x square की term, which is minus x square plus 45x. Now minus 200 minus 124 will give us minus 324, which is equal to 0. So ये तो हमने फॉर्म कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने अभी तक 50% मार्क्स ले लिए हैं. अगर ये 4 नंबर का है तो हमको 2 नंबर यहां तक मिल जाएंगे. ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, फॉर clarity or for removing confusion, it is advisable कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो आप क्या करो, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. मैथमेटिकली वो पॉसिबल है, या क्योंकि वो इक्वेशन है बराबर ही रहेगी. इससे हमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिलेगा और आप लोग कम मिस्टेक्स करोगे. ओके, सो व्हेन आई डू दैट, सो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर plus 45 becomes minus 45x, minus 324 becomes plus 324. 0 multiplied by minus 1 will remain 0. Now, what is the product here? Product is 1 into 324, which is 324 only. What is the sum here? Sum is minus 45. अब बच्चों, when we have to do middle term splitting, so अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर तो आपको बहुत बड़ा लगेगा. So what will you do? सो यहाँ पे आप क्या करिए, यू डू प्राइम फैक्टर्स. ओके, मैं करके दिखाता हूँ आपको. देखिए, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब इवन नंबर 2 से डिविजिबल, डिवाइड बाय 2. सो यू विल गेट 1 एंड देन 6 एंड देन 2, देन अगेन 2 से डिविजिबल 81. और प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं हमें, ठीक है. सो जस्ट कीप ऑन डूइंग प्राइम फैक्टर्स. सो आई एम जस्ट डूइंग प्राइम फैक्टर्स. और हमें क्या मिल रहा है कि भाई 324 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, इसी कॉम्बिनेशन से हमको हमारा आंसर मिलेगा. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 324 और सम होना चाहिए माइनस 45. सो अब आप देखिए, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 and 9. Okay, 3 into 3. Can they give me 45? Yes. हमें क्या चाहिए, माइनस 45. सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे माइनस 36 माइनस 9. उससे क्या होगा, आई विल गेट सम एज माइनस 45. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, वी नो यही फैक्टर्स हैं, सो यू विल गेट 324 plus. Okay, so now we rewrite. So we write x square minus 36x minus 9x plus 324, which is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, between these two x is common, so take x common. So x minus 36. Okay, now 3
24 और 9 में 9 कॉमन है, मुझे यहाँ पे माइनस साइन चाहिए इनसाइड, तो हम क्या करेंगे, -9 कॉमन लेंगे, +9 नहीं। सो -9x डिवाइडेड बाय -9 इज x, +324 डिवाइडेड बाय -9, so plus divided by minus is a minus, and you will get 36 only. See, 36 into 9 gave us this, so we have this. Now what is happening? X minus 36 times x minus 9, which is equal to 0. अब हम क्या करते हैं, just give me a second students, let me minimize this also and get some space for solving. Let me use different color now, so we will use again zero product rule, which will mean either x minus 36 is 0, which gives x equals 36, or x minus 9 is 0, which gives us x equals 9. So X क्या है? Number of marbles with John. So we are saying if John has 36 marbles, so I am writing John here, then Jivita should have 45 minus X, which is 9. And if John has 9, then Jivita should have 36. So this is our answer. Okay, students. So I would suggest rewind the video, watch the solution again, and then pause the video and solve it yourself. जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, so moving on to question number 2, second part. The question is, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in the day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. Okay, and we would like to find the number of toys produced on that day. Okay, so now let us assume that the number of toys produced, okay, in a day, number of toys produced per day is x. Now क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, सो मैं सिर्फ कॉस्ट लिख रहा हूँ जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्वेश्चन के हिसाब से वो है 55 माइनस एक्स. ओके, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज. नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स, सो 55 माइनस एक्स. नाउ on a particular day, total cost of production was 750 rupees. अब total cost of production हम कैसे करेंगे भाई, cost of one toy पता है और हमें पता है टोटल कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, इन अ डे would be x times 55 minus x. Okay, and according to question वो किसके बराबर है, that is equal to 750. So now if I multiply x with 55, I should be getting 55x, and plus x into minus x will give us minus x square equals 750. So let us change the side. So let us change this to other side because we would want x square to be positive. Okay, so now you will get x square minus 55x plus 750 which is equal to 0. So ये हो गया हमारा quadratic equation. So students, in exam you can get this as a case study question, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा find the cost of production for the day. So जिसका आंसर सिर्फ ये होगा x into 55 minus x. Then they will say second question form an equation. So वो ये हो जाएगा, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन कुड बी, जो कि ये क्वेश्चन ही है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस पर डे. ठीक है, केस स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चंस को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं एंड यू आर आस्क्ड फॉर ईच स्टेप. ओके, सो आपको स्टेप्स का भी क्लैरिटी चाहिए. नाउ we need to solve this by middle term splitting, so let's do 750. So you divide by 5, what will you get, you will get 150. Then again divide by 5, we will get 30. Then again divide by 5, we are going to get 6. Then 2, okay, and 3. Okay students, so अब हमको क्या चाहिए, we want
द प्रोडक्ट जो कि है 750 and sum which is coefficient of x which is minus 55. So can you see 5 5s are 25 and 30 will give me 55. So if I do minus 25 minus 30 I will get minus 55 as sum, and if we multiply we will get plus 750. So अब हमको middle term splitting करके let us write like this. So x square minus 25x minus 30x plus 750 equals 0. So between these two, let us take x common. So x square divided by x is x, minus 25x divided by x is minus 25. And since in the inside the bracket, I have got x minus 25. That means यहाँ मुझे अगले वाले ब्रैकेट में 750 को भी जो भी मैं करूंगा माइनस चाहिए. सो आई विल टेक माइनस 30 कॉमन. ओके, सो नाउ माइनस 30x divided by minus 30 is x plus 750 divided by minus 30. So plus divided by minus is a minus, and 75 divided by 30 will give me 25 क्योंकि वो तो हमने यहाँ देख ही लिया था 25 into 30. So now x minus 25 times x minus 30 which is equal to 0. So x could be, so either x minus 25 is 0 क्योंकि we are using zero product rule, or x minus 30 equals 0. So from here we get x equals 25 and from here we get x equals 30. So both could be our answers. Either x is 25 or x is 30. क्योंकि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय अगर देखिए x 25 है तो कॉस्ट ऑफ टॉय हो जाएगी 30 रुपीज, and if x is 30 cost of each toy would be 25 rupees. Okay, so both are the possible answers. Okay students, now let us move to next question and see what is being asked. The question says find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ओके, हमें दो नंबर चाहिए ऐसे जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट है 182. सो लेट द नंबर्स बी x एंड y. सो लेट द नंबर्स बी x एंड y. सो हम ये मान रहे हैं लेट numbers be x and y. Now according to question their sum is 27. So x plus y equals 27. Okay, and product, so product क्या होगा x into y which is equal to 182. ठीक है. So in order to create quadratic equation हम क्या कर सकते हैं, देखिए you go to the first equation and say y equals 27 minus x. You could have said x equals 27 minus y, that is also perfectly okay. ठीक है, हमें प्रोसेस फॉलो करना है कोई सा भी हो, बट उससे हमें now this value of y which is 27 minus x we will replace here. So अब हमको क्या इक्वेशन मिलेगी if I do that? So you will get x into 27 minus x which is equal to 182. X into 27 is 27x. X into minus x is minus x square which is equal to 182. Now see, for simplicity we want coefficient of x square to be positive. Negative रहेगा तो भी हम solve कर सकते हैं, but generally it has been found students make many mistakes if the coefficient of x square is negative. So आप लोगों की सहूलियत के लिए you just ensure that coefficient of x square is positive. So what should we do? Bring minus x square to this side, it will become plus x square. Bring 27x to this side, it will become minus 27x. So let us write that. So I will have x square minus of 27x plus 182. 182 तो अपनी जगह में रहा, so it is not changing side, which is equal to 0. Now what should we do? So we have product as 182, sum as minus 27. So अब अगर आप आपकी प्राइम फैक्टर्स करेंगे, so this is 2 and this is 7 and 13. Okay, now from here only it is very clear, 2 sevens are 14 and 13. 14 and 13, if both are negative we will get sum as minus 27. So ये box tick हो गया. Minus 14 into minus 13 should be plus 182. So ये box भी tick हो गया. That means what? ये हमारा सही combination है. So let us
use this now. So I'm going to write x square minus of 14x minus of 13x plus 182 which is equal to 0. Now in दोनों में what is common? X. So take x common. X square divided by x is a x. Minus 14x divided by x is minus 14. नाउ हमें सेकंड वाले में भी ब्रैकेट में ऐसा चाहिए कि कांस्टेंट के आगे नेगेटिव हो और एक्स टर्म पॉजिटिव हो. सो वहां माइनस 13x प्लस 182 है. सो वी आर गोइंग टू टेक माइनस 13 कॉमन. नाउ माइनस 13x डिवाइडेड बाय माइनस 13 इज प्लस x plus 182 divided by minus 13 plus divided by minus is a minus and we will get 14. Okay, see students, once you are done with factorization, so आपको दोबारा से डिवाइड नहीं करना है 182 को 13 से. गो बैक एंड सी 14 times 13 gave us 182. So अगर 13 कॉमन है 182 divided by 13 will give us 14. Okay, I have found many students redoing the work and wasting time. So वो हम नहीं करेंगे. Now x minus 14 common times x minus 13 which is equal to 0. Zero product rule will say x minus 14 equals to 0 which is x equals 14 or x minus 13 equals 0 which gives x equals 13. इससे क्या होगा? So if x is 14, y क्या होगा? y हो जाएगा 13 and if x is 13, y would be 14. So both the answers are possible. Okay. Now students, let's move to the next question. Okay, students, if you are watching video till here, I must say that you are serious about studies and you want to do really well in life. Also, if you have reached up till here, I will again request कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए. Okay, now let us move to the next question. Next question is question number 4. It says find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Okay, we are doing question number 4 main. So students, let us talk about integers. See, मैं आपको अगर कहता हूँ 3, so what is the number after 3 जो कि consecutive है? So आप कहोगे 4 which is 3 plus 1. Similarly, if I say भाई 99, what is the next number consecutive to 99? So it would be 99 plus 1 which is 100. Okay, so this is the concept we are going to use. Okay, so now let us say अगर number एक integer x है तो accordingly the next integer would be x plus 1. So we will say let the two positive consecutive integers, okay, positive consecutive integers be x and x plus 1. Okay, students, x minus 1 and x भी consecutive positive integer हैं. Okay, उस तरीके से भी हम solve कर सकते हैं, but for now we are doing this. Okay, now the question says, according to question, sum of the squares of these two consecutive positive integers is 365. So क्या question कह रहा है? ये कह रहा है भाई x को करो square and then x plus 1 को भी square करेंगे, then that sum is equal to 365. Okay, now so this is x square, this is x plus 1 whole square, which is what? Which is in the form of a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. So now a is x, b is 1. So you will get x square plus 2x plus 1 square which is 1 plus 365 को हम साइड चेंज कर देते हैं, it becomes minus 365. Now x square plus x square is 2x square plus 2x and you will get minus 364 which is equal to 0. Students, if you note, all the three numbers are divisible by 2, so let us divide by 2 so that we will have a simple equation. So x square plus 1x minus 182 which is equal to 0. Okay, now 182 का हमने already prime factors पिछले question में किया था. We have already done this in the previous question and we had found 13 and 14. Now can this give me plus 1x as sum? So see, what is the product here? Product is minus 182. Sum is 1.
So if I have plus 14 and minus 13, will I get sum as 1? Yes, ticked. Now, plus 14 into minus 13, will I get minus 182? Yes. So now let us split the middle term and write it as x square plus 14x minus 13x minus 182, which is equal to 0. Now, between these two, let us take x common. X square divided by x is x. 14x divided by x is this. And then let us take minus 13 common. Minus 13x divided by minus 13 is x. And minus 182 divided by this is. So, now x plus 14 times x minus 13, which is equal to 0. So what will we do now? We will use zero product rule. And when we use zero product rule, so that would mean either x plus 14 is 0, either x plus 14 is 0, or x minus 13 is 0. Now if x plus 14 is 0, x equals minus 14. And here x equals plus 13. Now question kya tha? Two positive integers. So we will reject this because this is not positive. So we will say rejected. So answer would be what? One number is 13 and other is x plus 1, which is 14. So 13 and 14 is our answer. Okay, students. Now let's move to the next question. Students, I would suggest that you revise this chapter again and try solving the questions yourself. Don't copy the solution. You understand and do it yourself. जब आप समझ के करेंगे, खुद से करेंगे, then आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है? खाली आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और का भी वीडियो देख रहे हो, उससे आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितना खुद करने से आएगी. Okay? That is very, very important. So now let us go to question number 5, where it says the altitude of a right triangle means 90 degree का triangle है, एक angle 90 degree है. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. So students, let us draw this diagram, though not required, but drawing will help. So okay, since it is a right angle triangle, so that means ये 90 डिग्री हो गया. So this is hypotenuse. Okay, altitude इसको बोलते हैं. ये हो गया altitude और ये हो गया base. Now question क्या बोल रहा है? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. That means अगर मैं base को x मान लेता हूँ, so altitude is x minus 7 and hypotenuse is given as 13. So अब तो हमको क्या करना है? Simply Pythagoras theorem यूज करनी है. What is Pythagoras theorem? H square equals a square, which is altitude square, plus b square. ठीक है? So now let us first do the question with the steps. We will say let the base be x, okay, centimeters. Then according to question, altitude is x minus 7 centimeter. Hypotenuse is given to us as 13. So we will say using Pythagoras theorem, so ये आपको लिखना है. मैं आप सीधा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि hypotenuse is 13, so 13 square equals x minus 7 whole square plus x square. Now when we have to solve x minus 7 whole square, it is a minus b the whole square formula, which is what? A square minus 2ab plus b square. What is a here? X. What is b here? 7. So now let us solve. So 13 square तो 169 हो जाएगा, वो हम लिख देते हैं. Now x minus 7 square, so x square, then minus 2ab. So minus 2 into x into 7 will give us minus 14x. So let us write minus of 14x. Then plus b square. So 7 square is 49 and then plus x square.
Now x square plus x square is 2x square minus 14x plus 49. 169 comes to this side, becomes minus 169, and here we get 0. So what is the equation we are getting? So हम इसको just a second, let me remove this part, we don't need this, and let us bring this here. Okay, now so you will have 2x square minus 14x minus 120, which is equal to 0. ठीक है, 49 minus 169 minus 120. Again, students, can you see 2 is common, so we can write it as x square minus 7x minus 60, which is equal to 0. ठीक है, now अब हमको क्या करना है? We have to do middle term splitting. So students, what should we do? Take 60, because what is the product? So सबसे पहले हम लिख लेते हैं product is minus 60 and sum is minus 7. Okay, so अगर आप इसे 2 से करेंगे so आएगा 30, again 2 से करेंगे 15. Okay, then 3 5s are and then 5. So कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमको minus 7 दे एंड प्रोडक्ट दे minus 60? ठीक है, सो अगर आप इसमें चेक करेंगे 2 2s are 4, 3s are 12, 12 and 5. सो मुझे क्या चाहिए? माइनस. सी 12 and 5 is the combination. Because we need minus, that means sign of my 12 should be minus and this should be plus. So minus 12 plus 5 gives us minus 7. Minus 12 into 5 gives us minus 60. So that is ticking the both requirements. So now what we will do, we will write this down as x square minus of 12x plus of 5x minus 60, which is equal to 0. And now we will simply do the last step, and I need some space, so I will quickly do this. And now see, between these two x is common, so x minus 12, and between 5 and 65 is common, so take plus 5 common, and then you get x minus 12, which is equal to 0. Then you get x minus 12 times x plus 5, which is equal to 0. Now according to zero product rule, either x minus 12 is 0 or x plus 5 is 0. So here x is 12 or x is minus 5. Now students, side of a triangle cannot be negative, so we will reject this. So we will say rejected. So that means we are saying that the side base of the triangle, so we have to answer. So base of the triangle should be 12 centimeter. Altitude is 12 minus 7. So 12 minus 7, which is 5 centimeter, and that is our answer. Now student, we come to the last question of exercise 4.2. Okay, let us read the question. The question is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article. ठीक है, so this is our question number 6. So यहाँ पे हम सबसे पहले क्या assume कर लेते हैं? हम बोल देते हैं भाई let the number of articles produced in that day equals x. Okay, यानी फैक्ट्री में उस दिन x number of articles मिले जो हमें मालूम करना है. What is it? Okay, now if we read the statement, it says cost of production of each article, cost of production of each article, मतलब one article, yeah, one article is 3 rupees more than twice the number of articles produced.
So भाई articles produced तो x हुए, so twice of that would be 2x, and it is saying 3 more, so that means 2x plus 3. So question कह रहा है कि भाई one article cost of production is 2x plus 3. Okay, so अब मुझे अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है ऑफ दैट डे, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द डे, ओके, फॉर द डे, so number of articles into cost of one article. So let's do that. So x into 2x plus 3. According to question, this is equal to 90. So let us equate it to 90. Okay. Again, students, ये it can be a case study question. So यहाँ पे आपसे they would have asked find the total cost of production for the day. So आप इसी को solve करते, you would have written 2x square प्लस 3x और आपको 1 मार्क मिल जाता. ठीक है. नाउ सिंस एंड द सेकंड क्वेश्चन वुड बी फाइंड द कॉस्ट. सो उसमें हम क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट इज गिवन टू अस एज 90 rupees, so we will equate it to 90 and then we will solve the quadratic equation. So 2x square plus 3x, 90 plus 90 comes to this side, becomes minus 90, which is equal to 0. Okay students, now what will happen? So अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज 2 times minus 90, which is minus of 180, and sum is coefficient of x, which is 3. So now let us do this. Split prime factorization, 2 90, again divisible by 2 45, 3 15, again 3 5 and 5. तो हमको क्या चाहिए, अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए that sum is plus 3 and product is minus 90. So आप देखिए क्या कर सकते हैं हम. 2 2s are 4, 3s are 12, 5 3s are 15. So 12 and 15. ओके, देखिए 12 एंड 15 में मुझे सम क्या चाहिए, आई नीड सम एज प्लस. दैट मीन्स साइन ऑफ बिगर नंबर शुड बी प्लस एंड स्मॉलर नंबर शुड बी माइनस. नाउ 15 minus 12 is the sum 3? Yes. 15 into minus 12 is the product minus 180? Yes. Fits the bill. So इसको यहाँ पे हम अब क्या लिख देते हैं, 2x square minus 12x plus 15x minus of 90 equals 0. So now between 2x square minus 12x, what is common? 2x. So 2x square divided by 2x, we will get x. Minus 12 divided by 2 will give me minus 6. X divided by x is 1. And here 15 and 90, so we will take 15 common. So 15x divided by 15 is x. Plus divided by minus is a minus. 90 divided by 15 is a 6. So what are we getting? X minus 6 times 2x plus 15, which is equal to 0. Now, according to zero product rule, okay, what should happen? X minus 6 is 0 or 2x plus 15 equals 0. So यहाँ हमें क्या मिलेगा? X equals 6. And here 2x is equal to minus 15. X equals minus 15 by 2. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? Number of products formed. It cannot be negative, so rejected. So we are rejecting it. Now the question is find the number of article produced. So number of article produced is 6. So let us write that down. Number of articles produced that day should be 6. Now, what was the question? It says cost of production of one article is 2x plus 3. तो उन्होंने हमसे वो भी पूछा है. So let us find cost of each article. So that would be 2 times 6 plus 3. So 12 plus 3, which is 15. So this is how we solve this question. Okay, students, now we will move to the next and the quadratic formula. So standard form of quadratic equation is written as ax square plus bx plus c equals 0. Okay, so if a quadratic equation is given to us, how do we know whether the quadratic equation has real
and distinct roots, real or equal roots, or no real roots. Okay. So for that, we find discriminant, which is D, which is given by the formula B square minus 4AC. Now, students, if the value of D is positive, which means greater than 0 or any positive value, then we say that the roots are real and distinct. Roots are real and distinct. Okay. What does that mean? That उस इक्वेशन में दो आंसर आएंगे x के और वो दोनों आंसर्स डिफरेंट होंगे. That is the meaning of real and distinct. And if the value of d is equal to 0, then roots क्या होंगे? They would be real and equal. Okay. And अगर d की value is less than 0, that means any negative value, so we will say no real root exist. Okay. No real root exist. Real मतलब real number. Okay. Real numbers क्या होते हैं? Negative infinity to positive infinity. So इसमें हम ये बता रहे हैं. Now, if we have d which is greater than 0 or equal to 0, then how do we find the roots of the equation by quadratic formula? Formula is x equals minus b plus minus square root of d over 2a. Okay. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ओके. सो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है. नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन वी विल सॉल्व. आई विल कीप दिस फॉर्मूला हैंडी बिकॉज ये आपको एग्जाम में बार बार लिखना पड़ेगा. ठीक है. मैं यहाँ पे शायद नहीं लिखूंगा बट यू आर सपोज टू राइट दैट. ओके. नाउ इट सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If the real root exists, find them. So question number 1, first one है 2x square minus 3x plus 5 which is equal to 0. Now students, इसको अगर हम compare करते हैं ax square plus bx plus c equals 0 से, so a क्या है? Coefficient of x square जो कि 2 है. So a is 2. b क्या है? Coefficient of x. What is that? If you see, it is minus 3. So हमको sign का भी ध्यान रखना है. So b is minus 3 and c, which is constant, is 5. Okay. Now let us find d. So d is b square. So minus 3 square minus 4 times a, which is 2 times c, which is 5. Now minus square is a plus and 3 3 is a 9. 4 2 is a 8, 5 is a 40. So you are getting minus 40. So d की वैल्यू क्या आ गई? minus 31, which is less than 0. So the answer is no real roots exist. Okay. So इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा. Okay. इन दी एग्जाम आपको ये एमसीक्यू में भी मिल सकता है जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन दी और आपसे पूछेंगे, आपको ऑप्शन देंगे कि उसमें किस तरह के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके. देन यू विल हैव टू डू लाइक दिस. Now let us move on to question number 1, second part, which is 3x square minus of 4 root 3x plus 4 which is equal to 0. Now again we will compare with ax square plus bx plus c. ये हमें स्टेटमेंट वहां देनी पड़ेगी अगर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है. अगर एमसीक्यू है तो हमको सिंपली देखना है भाई a है 3, b है minus 4 root 3 and c है 4. ओके. सो अभी d निकालना है तो b स्क्वायर. सो minus 4 root 3 square minus 4 into a into c. Now minus squared is plus, so sign हो गया. 4 square is 16, root 3 square is 3 और यहाँ क्या होगा? 4 3s are 12, 4s are 48. ओके. तो हमको मिल रहा है 48 minus 48 which is 0. अभी d 0 है. अगर d 0 है तो क्या हमारा आंसर होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स. ओके. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर रियल रूट एग्जिस्ट वी हैव टू फाइंड. सो अभी हमें d 0 मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? लेट अस फाइंड द रूट्स. सो x इक्वल्स माइनस b. मेरा b क्या है? माइनस 4 रूट 3. सो माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3. d जो है 0 है, सो रूट ऑफ d भी 0 होगा. सो प्लस माइनस 0
बाय 2a। a कितना है? 3 है, सो 2 × 3। अभी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, ये हो गया 4√3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो 2 2 2 3 सो हमारा आंसर हो गया 2/3√3। ओके, सो दो रूट्स होंगे और दोनों की वैल्यू क्या है? 2/3√3। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ फर्स्ट मेन। ओके स्टूडेंट्स, so now the question given to us क्या है? क्वेश्चन 2x² minus 6x plus 3 equals 0। so a क्या है? 2, b क्या है? -6, c क्या है? 3। so आइए d फाइंड आउट करते हैं। b² which is -6² -4 into a into c। minus square is plus, 6 square is 36, 4 2s are 8, 3s are 24। so 36 minus 24 is 12। so अभी d क्या है? 12 which is greater than 0। so इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रूट्स दो होंगे अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अब हमें d मिल गया, सो रूट ऑफ d क्या होगा? रूट ऑफ d होगा √12। ओके, √12 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या है? 4 × 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो यू विल गेट 2√3। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है x। सो लेट अस डू दैट। सो x इक्वल्स -b, सो माइनस ऑफ -6। स्टूडेंट्स, आप जब भी ये सॉल्व करेंगे साइंस का खास ध्यान रखना है। देन प्लस माइनस 2√3 upon 2a, so 2 × 2। okay, now minus of -6 is 6 plus 2√3 and minus 2√3, 2 2s are 4। अब न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, so 6 divided by 2 is 3 plus minus √3 अपॉन 4, ये 2 और 4 ये कट जाएगा। सो x क्या है? वन ऑफ द वैल्यू इज 3 प्लस √3/2 and the other value is 3 minus √3/2। So this is how we solve questions using quadratic formula। Okay, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब हम चले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब देखिए हमें क्या दिया है? हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 2x² प्लस kx प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो अब a क्या है? अभी हम क्या करेंगे? लेट मी राइट, वी विल से कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। ओके, हमें ये स्टेटमेंट देनी है। And what is a? A is 2. What is b? It is k. What is c? It is 3। Now the question says that they have two equal roots। So हम कहेंगे for real and equal roots, okay, of the quadratic equation d which is equal to b² minus 4ac should be equal to 0। So हम ये कह रहे हैं कि b² minus 4ac should be equal to 0। अब b² क्या है? b है k, सो k² -4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 0। सो k² -4 2s are 8, 3s are 24 विच इज इक्वल टू 0। अभी k² इज इक्वल टू 24। सो k की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट ऑफ 24। स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास इवन पावर आए वेरिएबल में और हमको उसकी वैल्यूज निकालनी है तो वो प्लस और माइनस होगा। जैसे देखिए, इफ x² इज 4 तो मेरा आंसर होगा x कैन बी +2 और -2। क्यों? बिकॉज +2 का स्क्वायर भी 4 देगा और -2 का स्क्वायर भी 4 देगा। सो दिस इज द रीजन वी टेक प्लस माइनस बोथ वैल्यूज। ओके, नाउ 24 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे? 24 इज 4 टाइम्स 6। ओके, सो अब हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो 2√6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम बढ़ते हैं
Question number 2, second question here. Students, I would suggest you to watch the video again. First, watch this video and then try to solve questions yourself. And then, if you have some concept issues, then watch the video again and understand it. Okay? It is very, very important that you are solving questions yourself. आपको खुद से question solve करना है. Without that, आपको learning नहीं होगी. Okay? So now second question is kx into x minus 2 plus 6 equals 0. So पहले तो इसे simplify करते हैं. Kx into x will become kx square. Kx into minus 2 will become minus 2kx plus 6, which is equal to 0. Now what will we do? We will compare. So we are saying comparing with standard form क्या है हमारी ax square plus bx plus c equals 0. A क्या है? Coefficient of x square, which is k. So A is equal to k. What is B? Coefficient of x. देखिए x को हटाइए तो क्या रह गया? -2k. So B is -2k and C is 6. Again हम क्या बोलेंगे? For the quadratic equation to have real and equal roots, b square minus 4ac should be equal to 0. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्कर आएगा तो आपको ये स्टेप्स करने होंगे. अगर एमसीक्यू आता है, आप सीधा एबीसी को अपने माइंड में भी देख लीजिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी सीधा स्टेप पे आ सकते हैं इफ इट इज एन एमसीक्यू. ओके, so now let us go back to the question and we are solving this. So let me minimize this. Sorry, let us minimize this again and we will get this. So now let us do b square. So b square means minus 2k whole square minus 4 into a, which is k, into c, which is 6, that should be equal to 0. Now minus square is a plus, 2 square is a 4, k square is this, and 4 6 are 24, so minus of 24k, which is equal to 0. Okay, if you see both the numbers are divisible by 4, आप divide कर दीजिए, so you will get k square minus 6k equals 0. अब हम factorize करेंगे k and k minus 6, which is equal to 0. कैसे factorize किया? Let us quickly see. k square minus 6k equals 0. k को common लिया, so अंदर क्या हो रहा है? k square divided by k minus 6k divided by k. Okay, so this k square divided by k is k and this is just 6. So that is what I have written. Now अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई with zero product rule, either k is 0 or k minus 6 is 0. So one value of k is 0 and other value of k is 6. Okay, now let us move to question number 3 main of this exercise. Okay, students, if you are watching this video and you have been watching the entire series, then I must commend your commitment and I would request you to share the video with at least 10 of your friends so that मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने की. ठीक है, एक ये छोटा सा फेवर आपका मेरे लिए काफी हेल्प करेगा. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. It says, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. So question हमें बोल रहा है कि भाई एक क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आपको आम का बागान बनाना है जो रेक्टेंगुलर हो और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो. सो बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले तो हम बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल फाइंड डी. अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल है, अगर नेगेटिव है तो नॉट पॉसिबल. सो लेट अस डू दैट. सो लेट अस से हम मान लेते हैं कि भाई ब्रेड्थ जो है, breadth of the rectangle here is x, so length is twice the breadth, so length becomes 2x. Okay, that is what question says. Then it says the area is
100 meter square. So what is area of a rectangle? Area of a rectangle is length into breadth. So 2x into x, which is 2x square. And according to question, वो है 800. Question says कि area is 800. Can you see यहाँ क्या हो रहा है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ आ गया x square equals 800 by 2, which is 400. So x क्या होगा? X actually plus or minus होगा, but since we are finding sides of a rectangle, so we will reject negative value. So हम सीधा a की वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो कि है 20. सो दैट मीन्स व्हाट कि भाई ब्रेड्थ हो सकती है 20 मीटर, लेंथ होगी 40 meters. Okay, so we will say yes, it is possible. Breadth of such rectangular mango grove should be 20 meters and length should be 2 into 20, which is 40 meters. Okay, काफी simple question है. Now let us go to the question number 4. So question number 4 is again यहाँ हमसे पूछ रहे हैं is the following situation possible? If so, determine their present ages. Now question says the sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48. So let us say हम हमारे को दो फ्रेंड दिए हैं तो हम ये बोल सकते हैं let the present age of फ्रेंड्स देर आर टू फ्रेंड्स. ठीक है, तो एक फ्रेंड की एज को हम मान लेते हैं x ईयर, दूसरे की y ईयर. सो क्वेश्चन सेज कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस यानी x प्लस y इज 20. देन 4 years ago. सी सबसे पहले हमें क्या करना है? 4 years ago what would be the age of this person who is right now x year old? So 4 years ago इसकी एज होगी x माइनस 4. यस, सपोज आप 15 साल के हैं तो 4 साल पहले आप कितने साल के थे? 15 माइनस 4, 11 साल के. सो हम वही कर रहे हैं भाई, कोई अगर x years का आज है, 4 years ago he would have been x minus 4 years old. Similarly, other friend would be y minus 4 years old. So it says, for according to question, 4 years ago the product of their ages was 48. So let us first do x minus 4 times y minus 4 equals 48. अब हमको quadratic equation बनानी है. So from the first equation we can say x equals 20 minus y, or you could have said y equals 20 minus x, means the same. Now this value of x we will put here. So substituting this value, we are going to say this is 20 minus y minus 4 times y minus 4 minus plus 48 comes to this side, becomes minus 48. Now 20 minus 4 is 16, so 16 minus y times y minus 4 minus 48 equals 0. अब देखिए 16 into y is 16y, plus into minus minus, and this is 16 times 4, which is 64. Minus y into plus y is minus y square, minus into minus is plus 4y minus 48 equals 0. So let us simplify. We are getting minus y square. Okay, 16y plus 4y is 20y minus 64 minus 48. Okay, so ये कितना हो जाएगा? 4 and 8 12, 6 and 4 10. So minus of 112, which is equal to 0. Okay, now जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, for removing any confusion, try to keep the coefficient of square positive. So हमें क्या करना है? Multiply both sides with -1. क्योंकि equation है, we can do that. So you will get y square minus 20y plus 112, which is equal to 0. अब हमें ये देखना है कि पहले तो क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं. So let us find d. So d is b square minus 4ac. What is a here? 1, coefficient of y square. What is b here? Minus 20. What is c here? 112. So let us do b square. So minus 20 squared minus 4 into 1 into 112. So minus 20 square हो गया 400
एंड यहाँ हो गया 112 इंटू दिस, we are getting -48 which is less than 0. So हम ये बोलेंगे कि this situation is not possible. Why? Because if d is less than 0, no real root exists. Okay. Now let us move to the last question of this exercise as well as the topic. Okay. So it says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Okay. So हमको दिया गया है perimeter. So let us say, let us assume that length of the park is x meters and the breadth is y meters. What is the formula for perimeter? It is twice length plus breadth. Okay. Perimeter कितना दिया है 80. So this is equal to 80. That is what the question says. So हम क्या कह रहे हैं 2 times x plus y equals 80. दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा x plus y equals 40. So ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया. Then it says and the area is 400 meter square. Now area कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? Area is length into breadth which is equal to 400 meter square. So हम क्या बोल रहे हैं कि x into y is 400. अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ y equals 40 minus x. This value of y we will substitute here. So we are writing x into 40 minus x equals 400. X times 40 is a 40x. X into minus x is minus x square equals to 400. Now let us make the quadratic equation and try to see whether real. First thing तो हमें ये देखना है कि d की क्या वैल्यू है. Let us find d. So I can write this as take minus x square to this side, it becomes plus x square. 40x to this side becomes minus 40x. So what am I getting? So हम उसको descending order में लिखेंगे. So x square minus 40x plus 400 which is equal to 0. Now comparing with ax square plus bx plus c equals 0. A is 1, coefficient of x square, b is minus of 40 and c is 400. So let us find d. So d, which is b square minus 4ac. So minus of 40 square minus 4 into 1 into 400. So minus square is plus 40 square, 4 square is 16 and यहाँ दो जीरो बन गए और इधर भी हो गया minus 1600. So d is 0. That means what? Real and equal roots. Okay. We will say real and equal roots. That means the roots exist. So how can I find x now? I will use the formula minus b. So minus of minus 40 प्लस माइनस, नाउ डी तो जीरो है तो उसका रूट भी जीरो होगा एंड डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 1. So you are getting x equals 40 by 2 which is 20 मीटर. So हम ये कह रहे हैं कि ऐसा रेक्टेंगल जो होगा, एक्चुअली इट इज अ स्क्वायर जिसकी लेंथ भी 20 मीटर है एंड ब्रेड्थ भी 20 मीटर है. Okay, so this is how we solve this, and with this question we are done with NCERT quadratic equation. Students, again it's a request, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो विद एटलीस्ट 10 of your friends which will help me a long way. Okay, आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा. आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं. थैंक यू.